Hello all, welcome to Pradyumna. My name is Pradyumna, and first of all, before starting this session, I would like to request you all to join our Telegram channel, that is Pradyumna. We make it easier for regular and latest updates from us. So we are talking about previous year question paper of 2021 that was held in 2021. This is a memory based paper of ECGC PO and EO examination 2021. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी बेस्ड है. दूसरी बात, मैं इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश का जो सेगमेंट है उसके क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ. साथ में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके ऑप्शंस बताऊंगा और सेम स्लाइड पे ही उसके आंसर होंगे. ये एक तरह से क्वेश्चन ईयर नहीं है एक्चुअली. दूसरी बात, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं. हम एक्चुअली यहाँ पे आए हैं कि हम आइडिया लगा सकें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और साथ में उनका लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इस सब चीज़ का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है और इस सब चीज़ का आइडिया लेने के लिए ही हमने ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने के लिए सोचा है. इसके साथ में एक चीज़ ये कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. जब हम वेरियस वेबसाइट से लाइक टेक्स्ट बुक से या और भी कहीं से भी हम जब सैम्पल पेपर्स सॉल्व करते हैं तो कई सारी वेबसाइट्स पे एग्जैक्टली आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार नहीं मिलते हैं. तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लेवल के हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल आपके एग्ज़ाम के बराबर है या नहीं, उन्होंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो टॉपिक्स आपको सूट कर रहे हैं या नहीं, और वो टॉपिक्स एक्चुअली आपकी एग्ज़ाम में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी आपको आइडिया लगता है. और साथ में द वेरी कॉमन थिंग कि आपकी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो वी आर स्टार्टिंग टुडे the previous year question paper 2021 of ECGC PO EO examination, and this is a memory based question paper. Our first question is about comprehension and I would like to read it for you. In the meantime, you can also read it from this slide. So I am reading it from here. Video games can have many different effects, both positive as well as negative on children. Some of these effects include increasing hand-eye coordination and increasing dexterity, mental skills, a decreased interest in other activities such as studies and sports, and a very negative effect of inducing violence. One of the most positive effects of video games is increasing the dexterity of a child and improving his or her hand-eye coordination. As mentioned earlier, the new video games that are coming out are extremely complex and they involve the movement of many different kinds of sticks and buttons on the controllers. They can be very good for children as they learn to make fast connections between what they see and what their hands and fingers are doing. This allows them to think quickly and improve their reflexes. The newest games are very precision based and it takes very minute and accurate movements for the children to control the characters. This helps in making the children much more adept at handling and operating real life machinery and objects. Another effect that playing video games have on children is that they tend to get addicted to playing these games and give them the foremost priority. This takes the children away from their other responsibilities such as doing house chores, homework and other physical activities. Children also end up spending more time playing video games in front of television screens that playing
real and actual sports that involve physical exercise. This in turn can have many health related problems for the children, as they can get obese if they don't exercise and stay home playing video games. This is perhaps the most negative effect that video games can have on children. Parents and educators all over the world are concerned about this phenomenon, and they are urging the children to not spend so much time playing video games. Many new video games consoles, such as the new Nintendo Wii, have come out with games that require users to actually get up and move. Many researchers have talked about the effects of viewing violence in the media and how it affects children. Video games take this to another level, where the children are actually participating in being violent in the video games. There are many games out there that allow the children to play arm-bearing characters who can kill anyone that they want, steal cars and commit many different kinds of crime. तो मैंने आपके लिए ये पढ़ दिया है कॉम्प्रिहेंशन, ये जो आपको टेक्स्ट दे रखा है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम और देता हूँ कि आप ये कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लें। इसके बाद हम ये के कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Now I think I have given you enough time to read this text. और जिनको लगता है, जिनकी स्पीड कम है, जो ये नहीं पढ़ पाएँ, सबसे पहली बात तो उन्हें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। साथ में ये भी कि अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वी हैव इनफ टाइम टू मेंटेन आवर रीडिंग स्पीड। सो अगर जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद वो वापस से प्ले करेंगे और हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, आप वहाँ से देख सकेंगे वो वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉम्प्रिहेंशन इज, इवन आफ्टर सो मैनी इफेक्ट्स ऑफ गेमिंग, व्हाई डू चिल्ड्रन स्टिल गेट अट्रैक्टेड टू इट? तो चिल्ड्रन क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इतने सारे उसके इफेक्ट होते हैं गेमिंग के, उसके बावजूद भी। फर्स्ट ऑप्शन इज, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स आर कंसर्न। Video games are fun, exciting and challenging. Video games have positive effects. Video games increase hand-eye coordination. तो पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स आर कंसर्न, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स अगर कंसर्न रहेंगे तो वो इसका अपोजिट होगा कि बच्चों को वो अट्रैक्ट होने नहीं देंगे गेमिंग के लिए, वीडियो गेम्स के लिए। थर्ड ऑप्शन पे हम जाते हैं, वीडियो गेम्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स। बच्चों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। इट्स दैट दे एंजॉय प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड दे प्ले इट। वीडियो गेम्स इंक्रीज हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बच्चों को इससे भी मतलब नहीं होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इससे इंक्रीज होता है और इससे और भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। सो द ओनली थिंग दैट मेक चिल्ड्रन प्लेइंग वीडियो गेम्स आर because video games are fun, exciting and challenging. Our next question is, how are video games responsible for a child's health related problems? Kids exercise at home. तो responsible कैसे हैं कि वीडियो गेम खेलने के बाद किड्स एक्सरसाइज करते हैं होम पे, घर पे? बिल्कुल गलत। वीडियो गेम्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन में ऐसी कोई लाइन नहीं दी है। पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड, पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम किस वजह से होती हैं, उसका जो वेरी सूटेबल आंसर ये है कि स्टे एट होम ऑल द डे। जब आप वापस से कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगे वहाँ पे आपको ये लाइन मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि ये आंसर हमने जो टिक किया है वो क्यों किया। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज ए वीडियो गेम इम्प्रूव ए चाइल्ड्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन? इसका आंसर भी बहुत स्पेसिफिकली वहाँ पे दे रखा है कि इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिक्स एंड बटन, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव,
totally wrong. It can be played anytime as for convenience. तो हैंड आई और कोऑर्डिनेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है. It has many positive effects. Positive effects is a result, and hand-eye coordination is also a result, but we need to find the reason how this improves a child's hand-eye coordination. The reason is this: it involves the movement of many different kinds of sticks and buttons. So the instruction for the next questions are: from the options given below, select the most appropriate synonym for the underlined word in the given sentence. So we have taken some words from the comprehension and we need to find the appropriate synonym for the underlined words in the given sentence. Parents, educators all over the world are concerned about this phenomenon. तो एंटोनिम और सिनोनिम वाले पार्ट में हमें ये पढ़ने को होगा. तो फ्रैंक्विल, अनट्रबल्ड, अनवरीड, काम, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कंसर्न एक नेगेटिव वर्ड है. कंसर्न मतलब चिंता कर रहे हैं, तो एंग्शियस का मीनिंग भी सेम रहेगा. तो दिस इज द आंसर. एंटोनिम ऑफ प्रायोरिटी, हमें प्रायोरिटी का एंटोनिम देखना है. इंपॉर्टेंट, salient, prior, dominant. So these are all like the synonyms of it, and we have been asked the antonym. So posteriority is the antonym of priority. Ninth one is most appropriate meaning of urging. It's like synonym. So most appropriate meaning of urging is disgust is not, deterrent is not, distaste is not, refrain is not, insistence is the most appropriate meaning for this word urging. Now we have another comprehension. I will read it for you. Those who have not get sufficient speed to read it fast should pause the video and just play it after you read it. In December 2015, SpaceX, a company dedicated to the exploration of space, experienced a huge breakthrough. They were able to launch an aircraft to the edge of space and were able to return it, landing it upright on a floating platform in the ocean. The Falcon 9 rocket was the first of its kind to be able to do so, and its significance is unparalleled. Furthermore, it has been able to accomplish this feat 6 times in the past 10 months, confirming its validity. Another great feature of the Falcon 9 rocket is that it is extremely affordable compared to the existing alternatives. It took approximately $440 million to complete the Falcon 9 project, or about a third of what it would normally take. The cost of a usual space launch is estimated at $1.32 billion, making space exploration extremely expensive and, more importantly, economically unsustainable. That is why NASA significantly reduced their spending in 2022, and could be an explanation as to why we still know so little about our surrounding environment. To make matters worse, NASA's solutions for return or to have them crash in the ocean, never using them again. However, with the newfound technology of being able to return spacecrafts that SpaceX has, frequent space exploration could become a possibility in the immediate future. Elon Musk, the founder of SpaceX, is by no means a rocket scientist. He is simply a well-educated man who continuously recognizes opportunities, always searching for untapped markets. Musk is the founder of PayPal, Tesla Motors, as well as SolarCity, and with the profitability of these companies, he has been able to pursue his true passion, space exploration. The next step for Musk and his team is to send passengers into space. Musk and SpaceX have been at the forefront of space exploration for the last decade, dominating the industry. If they are able to construct spacecrafts that could transport passengers, then Musk may see his ultimate dream come true. This is to send people to Mars. The reason behind this dream, because Musk realizes the dangers await us on Earth. He wants to send people to Mars not only for the sake of colonization, but also to inspire the people on Earth, to try and show them that humans can indeed
become a multiplanetary species. So the first question from that comprehension is, why does Musk want to send people on the Mars? So he realizes dangers that awaits us. So the answer is somewhere here. He realizes the dangers that awaits us on Earth. Here is the answer to that question. He is very rich. This is not the answer. He wants to conquer Mars. This is also not the answer. He is well educated and grabs opportunity. This is not the answer. Next question is, why do we know so little about our surrounding environment? So around our surrounding is infinite is not the answer. People are ignorant is not the answer. Not everyone is going to do research of space. There is no enough exploration. NASA has reduced their spending. This is what is written in the comprehension. This can be the answer, but this is not written specifically in the comprehension. This is specifically written in the comprehension. NASA has reduced their spending. Why SpaceX was a breakthrough? It is founded by Elon Musk. No, this is not the reason. Many scientists were behind SpaceX. This is also not the reason. SpaceX breakthrough क्यों था, ये हमारा क्वेश्चन है. तो ब्रेक थ्रू इसलिए रहा क्योंकि they were able to launch, return and land aircraft. तो वो ये सब जो हासिल कर पाए उसकी वजह से वो एक ब्रेक थ्रू रहा. इट कम्पीट्स विद द नासा. नो, दिस इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर डोमिनेटिंग. जब भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करें तब आप सबसे पहले इसको सर्कल कर लें कि एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है. कई बार नॉट वर्ड लिखा हुआ होता है, आप उसको एनसर्किल कर लें. एनसर्किल करने से आपको पता रहेगा कि मुझे आंसर में क्या लिखना है. हम डोमिनेटिंग देखते हैं और कोई भी रिलेटेड इन्फ्लुएंसिंग जैसे हमने वर्ड देख लिया तो हमें लगता है कि इन्फ्लुएंसिंग इज द सिनोनिम ऑफ डोमिनेटिंग. तो हम फटाक से इसका आंसर लगा देते हैं क्योंकि हमको वो फर्स्ट ऑप्शन में ही वहाँ पे मिल जाता है. लेकिन एक्चुअली हमसे पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है, और इस तरीके से करने से हमें उसका आंसर गलत कर बैठेंगे. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको जैसे ही खुद से कोई भी सूट करती हुई चीज़, खुद से रिलेटेड कोई भी चीज़ दिखती है तो वो उस पर जल्दी अट्रैक्ट होता है. तो आप जैसे ही इन्फ्लुएंसिंग बढ़ेंगे तो अट्रैक्ट होकर आप इन्फ्लुएंसिंग पे टिक करके और आगे बढ़ जाएंगे. जबकि हमसे क्वेश्चन में असल में पूछा था एंटोनिम. तो आप कभी भी एंटोनिम दिया हो, नॉट दिया हो, तो इस तरीके के जब वर्ड्स दिए हैं उसको अंडरलाइन कर लें जिससे आपको याद रहे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना. तो हमसे यहाँ पूछा है डोमिनेटिंग का एंटोनिम. इन्फ्लुएंसिंग इज नॉट एट ऑल द एंटोनिम ऑफ डोमिनेंट. कमांडिंग, गवर्निंग, रिप्रेजेंटिंग, दीज आर नॉट द एंटोनिम. सबमिटिंग इज द एंटोनिम. मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एक्सप्लोरेशन. Ignorance is not, unfamiliar is not, forsake is not, identity is not. Exploration is like investigation. Next one is, however, with the newfound technology of being able to return spacecraft that SpaceX has, frequent space exploration could become a possibility in the immediate future. Space has discovered. They have not hidden anything, they have not reduced, they have not concealed. Inspired and discovered are seen to be answered. But however, with the newfound technology of being able to return spacecraft that SpaceX has discovered, they have not inspired anyone or anything in this case according to this line. And so the most suitable word is discovered. We have another comprehension. I'll read it for you and please follow the same instructions that I told you earlier. The economic impact of COVID-19 is very disturbing. No one has been spared of its ill effects. Economies of about 100 plus countries have been destroyed, out of which some of them have asked for monetary help from IMF. There is a big shift in the world economic market and the share market has witnessed crashes day by day. Factories, restaurants, pubs, markets, flights, supermarkets, malls, universities and colleges, etc. were shut down. Fear of coronavirus has limited the movement of individuals.
People were not even going to buy the daily essentials, and these all were somewhere impacting the economy of the world as a whole. The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, reveals that they have cut their expectation for global growth to 2.4% from 2.9% and warns that it could fall as low as 1.5%. India faces a huge decline in government revenues and growth of income for at least 2 quarters as the coronavirus hits the economic activity of the country as a whole. A fall in investor sentiments impacts privatization plans, government, and industry. The lockdown in India will have a sizable impact on the economy, mainly on consumption, which is the biggest component of GDP. India's total electronic imports are equal to 45% of that of China, around one-third of the machinery, and almost two-fifths of the organic chemicals that India purchases come from China for automotive parts and fertilizers. China's share in India's import is more than 25%. Around 65 to 70% of active pharmaceutical ingredients and around 90% of certain mobile phones come from China to India. COVID-19 has disrupted global supply chains, and this is generating spillover effects throughout different levels of supplier network. Global trade in 2020 will fall in every region of the world and will affect all sectors of the economy. So आपने एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस की होगी कि हमें यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हैं, तो जब भी आपको ऐसा कोई कंप्रहेंशन मिले जहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हों, तो प्लीज़ जब आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें आप, तो आपको जो रफ पेपर अपने एग्ज़ाम में मिलता है उसमें आप ये सारी चीज़ें अलग से नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो वापस से आपको पूरा कंप्रहेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप शॉर्ट में जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप ये अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको एक साइड में लिख के रख लें. दिस विल हेल्प यू अलॉट. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. Why global trade will fall in every region of the world? India's electronic imports are 45% of that of China. This is not at all the reason. There are lockdowns in every part of the world. This is the reason. COVID-19 has greatly impacted the economy. This is also the reason. But why global trade? Trade is exporting and importing and selling and buying. So the global trade will fall in every region. तो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग ये सब कब डिसरप्ट होगा? जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव बीन डिसरप्टेड. जब ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगी तब ग्लोबल ट्रेड विल फॉल in every region of the world. So this is the most suitable answer, and this has been given in the comprehension expressively. Now, how will lockdown impact India? It will help to grow an economy? Not at all. It will make people stay at home. So this is also not the answer. It will increase export. This is quite opposite. This is quite opposite, and this is not the answer. It will have a great negative effect on GDP. So this is what was discussed in the comprehension, and this will be the right answer. Next question is, why India faces a huge decline in government revenues and growth of income? So what will be the reason? People are not buying Indian products. This is not at all discussed in the comprehension. Global growth could see 1.5% fall. So India faces a huge decline in government revenues and growth of income. So this is not based on global growth. India is not able to grow its economy. This is not. So coronavirus was expressively been discussed in the text. Coronavirus has hit the economic activity. This is the correct answer. Next one is, what limited the movement of individuals? So what limited the movements of the individual? Lockdown in the country, slowdown of the economy, fall in investor, fear of coronavirus. So this is the answer. We were expressively being talked about coronavirus in that. So these are the question of fill-ups. I will read it for you and you should follow it. The Reserve Bank of India on Friday asked the banks and other lenders to report the accounts restructured due to coronavirus.
First fill up. To credit bureaus, lenders should make necessary question mark to their system and question mark it to credit bureaus within 2 months. The banking regulator said all commercial banks, including small finance banks, local area banks, and regional rural banks, primary urban cooperative banks, state cooperative banks, district central cooperative banks, India financial institution, Exim Bank, NABARD, NHB, and SIDBI, and non-banking financial companies, including housing finance companies, were fill up to apprise the credit bureaus about restructuring the accounts. The regulator modified the format to again fill up the restructuring of accounts due to COVID-19. For the Consumer Bureau, the label of the field written off and settled status is modified as credit facility status, and it will also have a new catalog value visually restructured due to COVID-19. RBI said for the Commercial Bureau, the existing field major reasons for restructuring will have a new catalog value visually restructured due to COVID-19. It added the again fill up field account status will have a new catalog value visually restructured due to COVID-19 for MFI Bureau. So here are the question. So when you read this very carefully, if you have practiced very well, you can answer these questions because these are directly related to your vocabulary. So if you have read many of the articles from the newspapers like The Hindu or Times Express or Indian Express and all that, so if you have read all that, you can easily answer these questions. This is all practice based. So fill up 1, I'm telling you the answer directly, separately. Fill up 2nd, the answer is modification. 3rd is the answer is report. If you read the articles from the newspapers, you will get an idea. And as I have said earlier, I am here discussing this previous year question paper only to get an idea about what questions were asked in the previous year question paper, so that you can prepare for your upcoming exam, that is ECGC PO 2020 according to this question paper. Next fill up, the answer is asked. You can revise it all. Fill up 5th, incorporate. और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चन पेपर मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इज़ियर पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसकी PDF फाइल देख सकते हैं और वापस से इसको रिवाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से. नेक्स्ट वन इज फिल अप 6, द आंसर इज एग्जिस्टिंग. नाउ these are the idiom and phrases part, and this is the question. Ahead of the curve. Ahead of the curve, what's the meaning of the ahead of the curve? And you need to answer, tick the answer which is the answer to that question. We cannot trust her as she is way ahead of the curve. So the meaning of the ahead of the curve is अपने समय से आगे होना और लोगों से कंपटीशन में आगे होना, इसको हम अहेड ऑफ द कर्व का मीनिंग रहेगा. वी कैन नॉट ट्रस्ट हर एज शी इज वे अहेड ऑफ द कर्व. वो लोगों से आगे है, वो लोगों से ज़्यादा होशियार है, वो लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ये कारण नहीं हो सकता कि हम उस पर ट्रस्ट ना करें. तो दिस इज नॉट द राइट आंसर. वन शुड नॉट बी अहेड ऑफ द कर्व बिकॉज इट इज़ डिजास्ट्रस. किसी को ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, किसी को अपने समय से आगे नहीं चलना चाहिए, या किसी को इनोवेटिव नहीं होना चाहिए, इन्वेंटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है. दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट. माई सिस्टर इज वे अहेड ऑफ द कर्व बिकॉज हर आइडियाज आर ऑलवेज इन्वेंटिव. मेरी सिस्टर है, वो अहेड ऑफ द कर्व रहती है, मतलब और लोगों से ज़्यादा आगे रहती है कंपटीशन में, बिकॉज हर आइडियाज आर ऑलवेज इन्वेंटिव, क्योंकि उसके आइडियाज जो हैं वो इन्वेंटिव होते हैं. सो दिस मेक सेंस एंड दिस शुड बी आवर आंसर. All over the place.
बॉय स्कैटर्ड हिज बुक्स एंड टॉयज ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस मतलब बिखेर देना, चारों तरफ फैला देना, या किसी भी एरिया को कवर करना एक तरीके से। शी वॉज वेटिंग ऑल ओवर द प्लेस टू कैच द बस। सो वो इधर उधर घूमते हुए इंतजार कर रही थी बस को कैच करने के लिए। तो दिस इज नॉट द आंसर। ये किसी चीज़ को बखेरने के लिए काम में आता है, ऑल ओवर द प्लेस। इट विल बी ऑल ओवर द प्लेस टू द लाइब्रेरी टू बोरो द बुक्स, to borrow the books. I will be all over the place, so this is not the answer. My friend has invited me all over the place. This is also not the answer. So the right answer is the boy scattered his books and toys all over the place. Next one is making a mountain out of a molehill. ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि राई का पहाड़ बनाना। सो मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोलहिल, तो राई का पहाड़ बनाना का ये इंग्लिश में है मीनिंग। और मैं आपको ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ द इंग्लिश कैन बी कन्वर्टेड इनटू हिंदी के लोकोक्ति और मुहावरे। तो आप इन दोनों को साथ में पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है इसका, और यू कैन बी अहेड ऑफ the curve from the other students who are preparing for the exam. So move to the answer. She can never make a mountain out of a molehill because that is difficult. ये मुश्किल है इसलिए वो राई का पहाड़ नहीं बना सकती। तो this doesn't make sense. We can make a mountain out of a molehill to complete the project. हमें राई का पहाड़ बना देना, this is not। राई का पहाड़ बना देना मतलब किसी बात को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, झगड़े को बढ़ाना है इस तरीके से, छोटी छोटी बात को बड़ी बना देना। रेबा इज ऑलवेज मेकिंग ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल एंड सो वी डोंट ऑलवेज टॉक हर सीरियसली। हम उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं सीरियसली, क्योंकि वो हर छोटी बात को राई का पहाड़ बना देती है, हर छोटी बात को बड़ा कर देती है। बाइट द बुलेट। हर अंकल पास्ट अवे बिकॉज ही हैड टू बाइट द बुलेट। उसके जो अंकल हैं उनकी डेथ हो गई बिकॉज उन्हें बुलेट खानी पड़ी। ऐसा नहीं, बाइट द बुलेट बिफोर दे डिस्टर्ब यू। This is also not the right answer. You can never bite the bullet without my help. This is also not the right answer. The teacher had told her to solve issue, so she will have to bite the bullet now. अब टीचर ने उसको ऑर्डर दे दिया है तो उसको bite the bullet मतलब उसको वो काम करना ही पड़ेगा। So this is the right answer. Call it a day. Call it a day का मतलब है जैसे काम खत्म कर देना, या जैसे कोई शॉपकीपर है वो दुकान बंद करके चला जाता है, या कोई काम हम बीच में ख़त्म कर देते हैं तो उसका इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब काम को ख़त्म कर देना बीच में। यू कैन कॉल इट अ डे टू परफॉर्म वेल। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। माई फादर हैज़ नेवर कॉल्ड इट अ डे। सो अगर आपको ईडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग पता है तो आप आसानी से उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, और किन सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ किया गया है वो आप अच्छे से पहचान सकते हैं। So she called it a day as she was feeling very tired. तो उसने अपना काम खत्म कर दिया क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। She is calling it a day because she has to finish her work. So this is the quite opposite. So these are the rearrangement questions. Receive the Nobel Prize. A. B. of Rabindranath Tagore is Gitanjali. C. the best collection of poetry. D. most noteworthy Rabindranath Tagore. E. in 1913 for Gitanjali. So right answer is C, B, D, A, E. Let's see, does it make sense if we try it like C, B, D, A, E. So first one is the best collection of the poetry of Rabindranath Tagore is Gitanjali. Most noteworthy Rabindranath Tagore received the Nobel Prize in 1913 for Gitanjali. Okay. Next one is when one of the biggest sources of absorption of carbon dioxide, thus it will result in global warming, will only disappear, there will be nothing left to regulate the gas. So the right answer is A, B, D, E, C. So when one of the biggest sources of absorption of carbon dioxide will only disappear, there will be nothing left. तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा. To regulate the gas of, thus it will result in global warming. Okay. Next one is cause air pollution, smoke, dust and harmful gases to the environment. The bigger danger pollution is probably.
So the pollution is probably the bigger danger to the environment smoke, dust and gas and harmful gases cause air pollution. So this one is the answer. Next one is status they belong to, inherited with human rights. No matter what case, every human being is creed, gender, the economic. अब हमें आसानी से समझ में आएगा कि डी से ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये चालू होगा. सो द राइट आंसर इज डी बी सी ई ए. डी इज every human being is inherited with human rights, no matter what case, creed, gender, the economic status they belong to. So this is the correct rearrangement. Next one is, and keep their bodies fit, perform yoga to relax their minds over the world, people from all. So हमें आसानी से समझ में आ रहा है, people from all over the world perform yoga to relax their mind and keep their bodies fit. So the answer is E D B C A. 39. Instructions मैं पढ़ता हूँ आपके लिए. In the following question, 2 columns are given containing 3 phrases. First, second, third. First, second, and third. The phrases are labeled A, B, C in the first column and D, E, F in the second column. A phrase from the first column may or may not connect with a phrase in the second column to make a grammatically and contextually meaningful sentence. Identify the correct option from those given below that gives the correct sequence in which one or more sentences can be formed. If none of the option makes it possible for a meaningful sentence to be formed, indicate none of these as your answer. So in this question, only B, F. Air pollution comes from both natural and human made resources. आप सारे ही ट्राई कर सकते हैं. फर्स्ट ए को डी, ई और एफ से कनेक्ट करके देखें. आप देखेंगे कि एक आंसर नहीं बन रहा है. एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम बोथ. आप ये तीनों ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बी को अगर हम एफ से कनेक्ट करते हैं तो एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होगा, बाकी से नहीं होगा. सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं. सो वी विल गो टू द आंसर डायरेक्टली. बी टू डी. Rain can bring joy as some consider it to be soothing or enjoy, important as a routine form of communication. So I think this is not right answer. There is some mistake from my end and I am really sorry for that. Oh, sorry, is the correct B, D. As communication technology had developed in recent history, posted letters on papers have become less important as a routine form of communication. So this one is correct. Sorry. AF. Rain can bring joy as some consider it to be soothing or enjoy. तो A को हम जोड़ेंगे F से, the aesthetic appeal of it. Now, next question. The instructions are the same. A new technology developed by Indian scientists for ecological restoration is helping in revival of mangroves degraded due to rising sea levels. So this one is the answer. आप बाकी के सारे आप ट्राई कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि ये जो है वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहे हैं. Governments will continue to play an important role in providing support for services and programs that can help individuals adapt. So this will connect to the effects of climate change. And second one is wildfires have become annual events that result in the loss of infrastructure. So this is the answer. ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको भी लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सिर्फ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनके लेवल को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम को पास करने के लिए. यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ना मैं उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. इफ़
you want me to explain the answers of these questions, I can make another video for it. और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारे आंसर्स एक्सप्लेन करने चाहिए, तो मैं उस पर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको एक्सप्लेन की हुई, इसके आंसर एक्सप्लेन की हुई कोई वीडियो चाहिए, तो मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगा. थैंक यू फॉर दैट. So the instructions are as follows. Select the phrase connector from the given three options which can be used to form a single sentence from the two sentences given below, implying the same as expressed in the statement sentence. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है और मैं इसको मीनिंग्स आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमें दो सेंटेंसेस दिए हुए. पहला सेंटेंस ये है, आर म्यूजिक टीचर इज सच ए टैलेंटेड म्यूजिशियन दैट शी कैन प्ले द गिटार द वायलिन. और यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकेंड सेंटेंस, दैट इज शी कैन ऑल्सो प्ले सैक्सोफोन. अब हमें ये देखना है कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड हमें सेंटेंस दिए हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए किसी भी फ्रेज का या किसी भी कनेक्टर का यूज करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे दे रखा था, हमें फ्रेज या कनेक्टर को आपको यूज करके इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और हमें इसको दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिसकी हेल्प से हम दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकेंगे. तो पहला है वाइल, दूसरा है फर्दरमोर, इन एडिशन टू. तो आसानी से हमें समझ में आ रहा है कि वो गिटार और वायलिन भी बजा सकती है, साथ में ही वो सैक्सोफोन भी बजा सकती है. तो इन एडिशन टू विल बी द करेक्ट आंसर. This is the first. I thought 7 was too early. Second, I changed the reservation to 8. तो क्या हुआ था? Afterwards, secondly, whereas. So only one afterwards. मुझे लगा कि 7 जो है वो बहुत जल्दी है. उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने 8 बजे का रिजर्वेशन कर लिया और मैंने चेंज करके रिजर्वेशन को 7 से 8 बजे का कर लिया. Next one is, I didn't know you would want the cheese cake. I also didn't know you would want the chocolate cake, so I got both. So this is the second. Either or, whether or however. So only two is the answer, whether. I didn't know you would want the cheesecake. Whether, I also didn't know you would want the chocolate cake, so I got both. So this is the right answer. Next one is, our vacation was a lot of fun. Second, the weather was cold. Only third, despite the weather was cold, our vacation was a lot of fun. So ये सारे क्वेश्चंस थे. मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रेड इजी वी मेक इट इजियर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब ज्वाइन करें जिससे आपको रेगुलर एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. साथ में आप REZIIN उसके बाद ENGLISH अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और आपके कोई भी डाउट्स हों वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर. सो आज का हमारा डिस्कशन सिर्फ इतना ही रहेगा. हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मैं ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे अहेड. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू सो मच. हैव फन.